Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Yes. So, Pankaj, from where you are? I'm from New Delhi, Ashram near Lajpat Nagar. Okay, okay, okay. कहाँ से एग्जैक्ट क्या एरिया So, बताएं? Ashram, Harinagar Ashram near Lajpat हरिनगर. Nagar. All right. So in your name, I can see you have in bracket written RAJ. Are you from Rajasthan or from Delhi only? No, sir. I'm from Delhi only. I'm from Uttarakhand, basically. Okay. All right. So you're living in Delhi for past I think 3 years. No, sir. I've done my schooling in Delhi only and All right. So graduation also. all right. So I have your CV with me, and over here from nowhere I can see you from Delhi. So just try mention your address or city at least. Okay, sir. आपका CV है मेरे पास. And you have got all India rank 10. Is that right? Yes, sir. So can you give me a brief introduction about yourself? Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Harinagar Ashram. I'm 24 years old. As far as my education qualification is concerned, I have completed my schooling from Guru Harkishan Public School, and I am a graduate from Indira Gandhi National Open University in BA program. I am recently qualified cost and management accountant with All India rank 10. About my work experience, I did my articleship in Goel and Goel Associates, a cost accountant firm in Lajpat Nagar, where I was assisted in preparation of data of cost records and cost audit and filing of cost audit report in XBRL format. We are 5 members in my family, and apart from my academics, I have exposed myself in extracurricular activities like participating in inter-school games like cricket, volleyball, and I am also a gold medalist in cricket and volleyball. And once I was a captain of cricket team in my All school. right. ठीक है. ठीक है. So Okay, so Pankaj, yeah, tell me something about your weaknesses. Sir, my weakness is I am not fluent in English as I am working on it. Earlier, I used to hesitate with talking to others, but now, as you see, I can speak in front of you as I have improved it by talking to people. And in my PPOT program, I initiated to talk with others qualified also. So yes, I can say that I have improved it by 60%, and in few more years, I'll overcome my fear of speaking fluency completely. Mhm. Okay, so Pankaj, you have mentioned that you have worked in conducting cost audit. Yes, sir. Can you name the company which you have audited? Yes, sir. There was a company, Jagan Mohan Cotton Textile JCT. It is there. There were two plants. One is Hoshiarpur, and one is in Punjab, uh, other district. But I went to the location of Hoshiarpur, where my principal gave me some task to do some material and checking out the uh, uh, textile textile material, and so I was only doing that task at that time there. Mhm. Okay, very good. And yeah, you have mentioned that you have won. You still play volleyball, No, sir, that was only till my or you education. follow? After that, when I was preparing for my CMA, I had to left the games as I shift. What are the things you play right now for physical fitness? You do something? Yes, sir. Physical fitness. I do go for morning walk, morning running every day. I never miss a day. I always go for exercise for my physical fitness. And apart from my fitness, I am very like I play brain games like Rubik cube, chess, and Sudoku at my free time. Okay, so are that's you able to beautiful. solve the Rubik's cube? Yes, sir. All the three left Yes, sir. Within 1 minute, sir. within 1 minute. Yes. All right. So I also know how to solve the cube. Have you tried the
4x4 cube No, or sir. just a regular cube? No, only a regular cube, but I'm planning to like purchase it like after some time. But I'm All right. really going for it. Mhm. ठीक है. And so what? So during your the CMA course, what was your favorite subject? Like what you feel very confident in? Sir, as a being a CMA student, I gave equal weightage to all the subject. But as I can say that GST is my good subject, and finance is also. Finance, you financial management and strategic financial management. Is that right? Yes, sir, financial management. So do you recall the formula for what? Just can you explain what is Sharp ratio? Sir, Sharp ratio. The formula of Sharp ratio is a return of stock minus risk-free rate risk-free divided by standard deviation. All right, and if I divide the ret difference of the returns by beta, what would you call that ratio? Sir, then it will be a trainer ratio. And what is Jensen alpha? Sir, Jensen alpha is expected return minus risk-free return. Sorry. So what do you call a difference between actual return and expected return? Let's Sir, say actual. from CAPM, I expect a return of 10%, but I was able to generate a return of 15%. So that 5% extra return over the CAPM, wouldn't that be the Jensen alpha? Uh, yes, sir. The sorry, my formula was wrong earlier. As Jensen alpha is what we are getting and what we are expecting, the difference between those. And yes, if I'm getting actual return of 15%, then it will be good as our expectation is 10%, but we are getting more than our expectation. So what would be the alpha? Alpha will be 5%. All right. Hmm. ठीक है. Over to Sonal, you can start. मैम ये म्यूटेड मैम आप म्यूटेड है म्यूटेड Mute है mute पे है. Yeah, so Pankaj, what is the contribution of information technology for implementing GST? Uh, Speaking about information technology, like ma'am, GST like like GST has its base of taking ITC to the recipients. Like there will be no mismatch. Like the supplier, if he is giving his outward taxable outward supply, then the recipient can only get that much of ITC. And also we have TDS and TCS section where there will be no evasion of tax. Okay. Uh, what is QRMP scheme? Then QRMP scheme is quarterly return and monthly payment scheme. It is available to the suppliers whose turnover is up to five up to 5 crore, and that for a QRMP scheme, if the return if the supplier is giving its recipient who are like business to business, then he can also furnish IFF. The due date of the return is 13th of next month, and the date of payment is 25th of next month. Okay. Okay. What is the concept of blocked credit? Blocked credit are the credit which I can say ki if a company is in the business of manufacturing, and if it is receiving canteen food items, then that will be its block items. And also like having a car whose passenger car who is sitting less than 13 seats, these are the example of block credit. So my side is this. Anyone else? Okay, Pankaj, last question. Considering you are the financial advisor of maybe Delhi government,
And what steps, any two or three points which you can advise Kejriwal ji to improve the financial position of the state? Sir, as being a financial advisor, I would suggest Mr. Arvind Kejriwal ji that we should focus on we should focus on the facilities we are giving to the uh, citizens of our state, like financial. Sir, can I take 2 minutes? Yeah, sure. Sir, I would suggest him that if we like in DTC, it is a revenue where our central government is uh, like I have read some articles where it was mentioned that DTC is going into losses. So, like giving free tickets to the women, I think if we will consider it by half, 50% of the ticket, it will be a good move for the profitability of DTCs. And beside from that, I would suggest him that we should increase more taxes as alcoholic liquor for human consumption is not under the purview of GST, but it is a state-owned taxes state tax is levied on these. So I would suggest him to increase the rate on these items which are harmful for our citizens. Okay, very good, All right. Pankaj. Well done. I have one more question. Pankaj, you have written you like to read novel. Yes, Can sir. you just tell me what was the last novel that you read? Sir, the last novel I read was Atomic Habits by the James Clark. Uh, James Clark. And okay, what are other books written by James Clark? You, Sir, like I'm not author specific person. I what is like, this book about? What is this sir, book Atomic Habit is about? it is about our 1% change every day. We can have a very good impact in our life. Like if we are doing anything that is 1%, like the progress we get after a period of time. But if we are doing it continuously, then it will give us a very good impact. It is Is that a basically novel, Pankaj? no, sir, it is not a novel. It is like a book we can inspire of. Hiru asked you about the novel you have read because you have written specifically reading novels. Do you Have you read understand the Harry difference Potter between or novel any and fiction based? normal book? No, no, sir. Fictional. I have read like The Girl on the Train, which was written by Paula Hawkins, and some books like Our Impossible Love of Durjoy Datta, and Enjoy. Love Can Happen Twice of Ravinder Singh, Yes. and many All right. more, sir. Yes. ठीक है Thank you, मैम. sir. Yes. बढ़िया. Okay. So Nitin पंकज sir, आप एक दिल्ली कैंपस में थे आप दिल्ली से पीपीओटी करी आपने Yes, sir. अच्छा आप पीयूष के सेशन आपने अटेंड किया था पीयूष चौरड़िया का Yes, sir. I have attended the session of Mr. sir. ठीक है ही इज वन ऑफ माय कलीग Okay. So, Pankaj bhai, overall I feel it was a very good interview. ठीक है. Yes, sir. बहुत अच्छा रहा. पर मैंने आपको पहले भी कहा था कैमरा पोजीशन कैसा रखा हुआ है, क्यों अपने आधे फेस को दिखाना चाहते हो, सबसे पहले ये सेकंड क्यों नहीं देखते हो आपको, कितनी बार बोलना पड़ता है एक ही चीज को, तो अभी इसलिए भी नहीं आ रहे आप पूरा आप खुद को नहीं देख पाते हो क्या? वो जूम में दिखता है, खुद का व्यू भी दिखता हाँ है ना, सर. फुल व्यू आप देखो पहले, है ना. बैकग्राउंड अगर ढंग का नहीं है तो उसको ब्लर करो. ब्लर का भी कैलेंडर रिमूव ऑप्शन कर होता सकते हो है. कैलेंडर अगर हैंग कर रहा है तो कैलेंडर वो हटा. स्टार्ट से पहले उसे रिमूव कर दो वी हैव Okay, sir. डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट ट्वाइस थ्राइस हैव डिस्कस कि ये सब सेटअप पहले देखो ऑनलाइन चीज में, है ना. तो इस पे आपका मार्क्स कट होगा. कैजुअल टी शर्ट में बैठ गया है इंटरव्यू में, व्हाई नॉट इन अ फॉर्मल,
इट इज अ प्रॉपर मॉक इंटरव्यू, फॉर्मल्स कहाँ हैं आपके, प्रॉपर उसी तरीके से आना था आपको। तो वो एक आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो गलत हुआ। फिर शुरुआत में हमने इतना तुमसे डिस्कशन कर लिया, फिर हीरो ने कहा कि तुम्हारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, तो तुमने फिर वापस वही कहानी बताई कि माय नेम इज पंकज रावत एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम फ्रॉम दिस जगह। वो तो ऑलरेडी तुम बता चुके थे। तो रटा रटाया आंसर को वापस मत बोलो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ कि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, तो उसको वापस रिपीटेशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो एक चीज थी। एक तूने वो 5 AM को मेंशन क्यों नहीं किया? आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि मैं 5 AM उठता हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर यू हैव टोल्ड मी, हाँ, राइट? यस सर, आई तो टोल्ड। वो मेंशन होना चाहिए आपका। जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया कि मैं रोज सुबह उठ के, सर दैट इज द डिसिप्लिन व्हिच आई फॉलो, आई गेट अप एट 5 AM एंड डू माय एक्सरसाइजेज एंड रनिंग, स्पेसिफिकली मेंशन करो अपना टाइमिंग। श्योर दैट सर। क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड, ठीक है। वो होना चाहिए। बाकी आई गेस ओवरऑल द नॉवल पार्ट में तू गड़बड़ कर दिया। नॉवल मालूम है होना चाहिए कि नॉवल क्या होता है और नॉर्मल बुक्स क्या होती है, राइट? हाँ इफ सर, एक्चुअली वो यहाँ पे लिखा है रिसेंट तो में। रीडिंग बुक्स कर दो, उसकी जगह हाँ, नॉवेल्स हटा दो, यस सर, आई हैव टू चेंज राइट? दिस। रीडिंग बुक्स। हाँ, मैं चेंज बाकी करूंगा। ओवरऑल आई गेस इट वाज वेरी गुड। सीवी थैंक यू अच्छा सर। है, सीवी देखा मैंने आपका। इसमें एक तो आपकी जो 10th रैंक है उसको बोल्ड कर देना, और हो सके हम्म। तो रिपीट करना टेबल के अंदर। सर और नीचे है, अचीवमेंट में है, उसको भी बोल्ड कर दूंगा। अचीवमेंट, हाँ अचीवमेंट में बोल्ड कर देना। उसके अलावा जो गोयल गोयल एंड एसोसिएट्स है उसके बहुत ज्यादा गैप छोड़ा हुआ है आपने, आई डोंट नो व्हाई। जो सर आपका वो, सीवी है, हाँ हाँ, हाँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा गैप छूटा हुआ है। और में किया है क्या आर्टिकलशिप? हाँ जी सर। रियल में आर्टिकलशिप किया आपने? हाँ सर, रियल है। बहुत, पर आपने जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं वो बिल्कुल भी वो नहीं है, लैबोरेटिव नहीं है। बहुत ही हाँ, जेनरिक दैट इज पॉइंट्स है। व्हाई। लग ही नहीं रहा हाँ कि एक एक्चुअल आर्टिकलशिप है। सर, आप एक्चुअली सर, जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की है, तो मेरे को ज्यादा काम, मतलब स्टार्टिंग में भी इतना काम नहीं मिला। लास्ट के मैं कहूँ तो लास्ट के 2 मंथ में ही मेरे को कुछ मिला था। बहुत और है। दो सर महीने उसमें में भी, जो जिस कंपनी में काम किया आपने, जिस चीज के ऊपर काम किया, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करो तब हम पूछ सकें। आपने अभी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स लिखे हैं। आप अगर ग्रुप में शायद केशव का सीवी आएगा, एक बार देखना। हो सके तो थोड़ा सा और इलेबोरेटिव लिखना अपना, ओके सर। इसको पार्ट को, ट्रेनिंग वाले पार्ट को। साहिल का सीवी आप देख सकते हो, केशव का ओके। CV साहिल ने भी थोड़ा इलेबरेट किया है। ओके मैम। हम्म। या हीरू, योर फीडबैक? बढ़िया है। अच्छा, आप सारी आपने की आपसे जो दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आपको क्लिक करे अच्छे। अगर आपको लगे कि आपके पास दिमाग में अच्छा पॉइंट है, बट जस्ट बिकॉज आप यू आर गेटिंग स्टक ड्यू टू द लैंग्वेज इशू, यू माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, तो आप हिंदी में स्विच करके उसको एक्सप्लेन कर देना कि सर डीटीडीसी मुफ्त में चीजें टिकटें बांटता है, उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता है। तो वहां से उसको स्टॉप करा जा सकता है। वी शुड आस्क फॉर फेयर फेयर टिकट प्राइसिंग। एंड द सेकंड इज, जो लिकर है, we can increase taxes on that, since it's a state issue. The taxation on liquor is governed by state, and also alcohol is a sin product, sin good. So we can increase the taxes with no repercussions. सर ऐसे मेरी करके लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं। इतना नहीं इतना है, बट चलेगा? अगर आपको लगे चलेगा इतना। पर अगर आपको लगे कि भाई मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, बट अगर इंग्लिश में पुट नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त आप हिंदी में स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छा है। दिल्ली के अंदर ये ओके दोनों सर। इसके ऊपर हाईलाइट भी हो रखे हैं। डीटीडीसी वाला हो गया, तो ये अच्छे पॉइंट्स है आपके पास। उसके अलावा ठीक है, अच्छा था आपका इंटरव्यू। टेक्निकली आप हो थोड़ा सा आर्टिकलशिप को थोड़ा सा और देखते हो तो कर लेना, बाकी अच्छा है। मैम एक क्वेश्चन था। या अंकित बोलो, या अ, बोलो। मैम वो एक्चुअली शॉर्ट लिस्टिंग अभी टीपीएम से ही आई है सर, एक ही कंपनी से आई है। और उस, हाँ मैम, टीपीएम कंसल्टेंसी, मेरा फ्रेंड भी वहाँ पे काम कर चुका है आर्टिकलशिप में। अच्छा। और वो बेसिकली ज्यादा एफटीपी और कस्टम से रिलेटेड ही है, क्योंकि उसने काम किया है वहाँ पे। तो उसने मेरे को बताया कि वो कंपनी ज्यादा कस्टम्स और एफटीपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेगी। हाँ तो हाँ। मेरे को एक बार कुछ मिल जाते वहाँ पे एफटीपी और कस्टम्स के, आपने क्वेश्चन शेयर किए हैं, लेकिन मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत है वहाँ पे। नहीं, एक्चुअली देखो, सबसे पहला तो बेस्ट एडवांटेज क्या है
कि आप उनको ये बोल सकते हो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्रैक्टिकली काम करने का मौका ही नहीं मिलता। उनको स्पेसिफिक्टली बोलो कि वी हैव 10 मार्क्स वेटेज जो हमारे कंटेंट में था, उसके अकॉर्डिंग जो कंसेप्चुअली जो मुझे पता है वो ये है, लाइक जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ईपीसीजी, एडवांस ऑथराइजेशन, एक अभी नई स्कीम जो आई है आरओटीडीईपी, है ना, वो 3-4 चीजें, क्योंकि यूजुअली सबसे ज्यादा जो काम आता है वो एडवांस ऑथराइजेशन इंडस्ट्रीज में, जो ईपीसीजी एंड ये जो नई स्कीम आई है आरओटीडीईपी, या फिर एक ड्यूटी ड्रॉबैक, ये 3-4 चीजों के ऊपर आप गो थ्रू कर लो। उनको बोलो कि एफटीपी के बारे में मुझे मतलब एक लिमिटेड नॉलेज है जो मैंने अपने कोर्स कंटेंट में पढ़ा है। कस्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कस्टम्स में बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, शिपिंग बिल क्या होता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, कस्टम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बस इतना इनफ है, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की, क्योंकि बोल हमें लिमिटेड नॉलेज है, जितना हमारा कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, तो दे अंडरस्टैंड दिस। वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एंड जो तुम्हारा फ्रेंड है उससे तुम एक बार बात कि अभी रिसेंटली क्या क्या काम चल रहा है, कि अभी Exactly. कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, एफटीपी की कौन सी पॉलिसीज पे प्रैक्टिकली आप लोगों के पास क्लाइंटेज है, क्योंकि अगर आपको भी रिक्रूट करेंगे तो उधर ही कहीं प्लेस करेंगे, तो किन पॉलिसीज पे आप देख लीजिएगा। मैं तो श्योर हूं और भी बता देंगे, ईपीसीजी, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्रॉबैक, ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है। ओके मैम। है ना, और फिर कुछ डाउट हो आप आज पूछो, अभी अपने पास कल का दिन है, आप मुझे रिवर्ट बैक करो, आई विल सपोर्ट कि क्या कर सकते हैं और इसमें। बाकी आपने आपका ओवरऑल आई एम हैविंग अ गुड इंप्रेशन। ये जो जीएसटी वाला एक आपने आंसर दिया, वहां पे आप एक ऐसा शुरू कर सकते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट रोल फॉर द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज जीएसटीएन। उसके बाद जो आपने बोला, और आप ठीक बोल रहे हो, मतलब अच्छा है आपका ओवरऑल, गुड। ओके। पंकज, आपका अटेम्प्ट लगा था कभी कोई बीच में? हाँ सर, फाइनल में अटेम्प्ट है। इसीलिए फाइनल में अटेम्प्ट है, अदरवाइज आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है। बट उसके बाद आपकी 10th रैंक आई है ऑल इंडिया। हाँ जी सर। तो अच्छा, आपने फिर वहाँ पे मार्क किया था सेकंड अटेम्प्ट जो फॉर्म फिल करते वक्त? यस सर, सेकंड मतलब उसमें लिखा है मैंने कि सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है सर, दैट्स व्हाई मुझे वो शायद बढ़िया लिस्टिंग नहीं आई। नहीं, पर ठीक फिर है। भी जब आप कैंपस में जा रहे हो ना, बिकॉज आप ऑल इंडिया 10th रैंक करो, डायरेक्टली आप अप्रोच करो, वहां पे जो एचआर के लोग बैठे होंगे ना कंपनीज के, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करो, बोला मेरा 10th रैंक है। अगर उनको वहां पे सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, और क्योंकि आप ऑल इंडिया 10th रैंक करो, तो वो वहां पर भी आपको एंटरटेन कर देते हैं, मतलब बोलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करो मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, और वो इसमें कई ना बार। पंकज, पंकज दो तीन चीज करना। एक, आपका जो सीवी है ना, उसको हो सके तो थोड़ा सा अगर कलरफुल, या जो एक दूसरा फॉर्मेट चलता है जो इन्फोग्राफिक वाला, उसमें कलर प्रिंट आउट्स निकला लेना। और आप फोर्सफुली, खासकर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वेदांता, आईटीसी, इन पे अपने सीवी देना उनको। आप भले शॉर्टलिस्टेड नहीं हो, और उसमें अपनी रैंक को हाईलाइट करना, बोलना कि सर मेरी ऑलरेडी रैंक 10 आई है, आप प्लीज इस सीवी कंसिडर करिए। आपको बाहर में भी शायद रोके, बट आप अंदर एक बार घुस तक के पकड़ा देना सीवी कि सर ऑल इंडिया रैंक 10 है, और आप मिले तो ही लेना। मुझे और अपॉर्चुनिटी दीजिए, और क्योंकि आपका कम्युनिकेशन टेक्निकल पार्ट सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वहां जो भी कंपनीज आपको लगे ना, आप जाइए उनको 2 बार रिक्वेस्ट कीजिए। आपको है ना, जो ऑफिशियल्स है वो कॉरिडोर में घूमते हुए दिखेंगे। हाँ। लंच ब्रेक, टी ब्रेक लेने के लिए कभी तो कोई जना रूम से बाहर आएगा ना, तो अब रूम के बाहर, जैसे वो अपन को होता है ना रूम के बाहर बैठ जाए, कि अपन को वेट करना होता है कि जैसे आज इसको जने को हम पकड़ लें, तो आपके प्रिंट आउट्स अच्छे थोड़े मोटे शीट्स के ऊपर, नॉट द रेगुलर ओके सर। A4 जो 70 जीएसएम वाला आता है, एटलीस्ट 100 जीएसएम या 120 जीएसएम वाले कागज पे, ताकि जब हाथ में दो तो लगे कुछ अलग चीज हाथ में आई है। ओके सर। ठीक है ना? श्योर वैसे सर। प्रिंट आउट्स जैसे ही वो दिखे, उन्हें पकड़ाना कि सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 10th आई है, आई डोंट नो व्हाई मैं शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुआ, प्लीज एक मौका दीजिए। ठीक है? यस सर। फर्स्ट डे पे अगर आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं लगा हुआ, अगर फर्स्ट डे, डे 1 पे, तब भी डे 1 पे आप पहुंच जाना वहाँ पे स्कोप और कॉम्प्लेक्स में। सबको ट्राई करना, ओके। आईटीसी होटल्स और वेदांता, वेदांता दोनों के अंदर। और लेंगे वो आप। दोनों चीज बोलना कि मेरी अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, ठीक है, बट आप ये जरूर बोलना कि मेरी फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 10th आई है, सीएमए ओके फाइनल। इसको बोल के फिर हाथ में पकड़ना सीवी, तो प्राइवेट में तो हो जाएगा। पीएसयूज में मे बी शायद नॉर्म्स ऑफ पीएसयूज इतना नहीं होगा, बट प्राइवेट तो बहुत आराम से वेदांता, आईटीसी, ये लोग एंटरटेन करते हैं। ठीक है सर, थैंक चलो, गुड, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू मैम, All the आप थैंक यू best. बताओ सर। अपने फ्रेंड से बात करके व्हाट्सअप करो, देन हम बात करेंगे, ठीक है? ओके श्योर मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।